Viewers, weeks after the Kolkata rape and murder horror, the West Bengal Assembly unanimously passed the anti-rape bill brought by the Mamata government. Titled the Aparajita Women and Child Bill 2024, it includes the provision of capital punishment for individuals convicted of rape in cases where the victim dies or the crime causes the victim to enter a vegetative state. While the proposed legislation is a step in the right direction, the politics around it and the RG Kar horror is refusing to die down. During her speech in the West Bengal Assembly, Mamata Banerjee hit back at the BJP, which has been demanding her resignation. She highlighted the number of crimes in the BJP-ruled states and said that PM Modi should resign because he is a shame for the entire country. নরেন্দ্র মোদীকে পদত্যাগ করতে বলুন। নরেন্দ্র মোদী পদত্যাগ চাই, তার কারণ সারা দেশে উনি জাতীয় লজ্জা। আমরা স্যার অমানবিক ঘটনা নিয়ে ওরা রাজনীতি করে, বিচার চায় না। ভারতীয় ন্যায় সেই কারণেই দ্রুত বিচারের জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতার কয়েকটি ধারায় সংশোধন করে আমরা ধর্ষণের ঘটনায় অপরাধে প্রমাণে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ডের সাজা প্রস্তাব করেছি। Now, while Mamata Banerjee blamed Prime Minister Modi, the BJP says that the Trinamool government is muzzling the media. They point to Section 73 of the draft, which says printing or publishing any matter related to court proceedings without permission will be punishable with imprisonment for 3 to 5 years and a fine. Listening to their charge that rapists and not the media will roam free in Bengal. Rabindranath Tagoreji's West Bengal, now there is Mamata Banerjee. It is only the Balatkaris who are free. It is only the elements like Sandeep Ghosh who feel empowered. But if you're a doctor, if you're a protester, then either the goons of TMC will try and threaten you, or else the Kolkata police will issue notices to you, or Mamata Banerjee will bring a bill which will put you in jail. Mamata Banerjee is extremely rattled. She's rattled because both the Supreme Court and the Calcutta High Court exposed her cover-up operation and directed the CBI to investigate the RG Kar rape and murder case, which her administration in the start was calling the case of suicide. Mamata Banerjee needs to understand no sort of intimidation can stop the media, can stop the people of Bengal from asking her relevant questions on the cover-up on RG Kar case. But the Trinamool Congress hailed the passage of the anti-rape bill as a historic moment and appealed to the Bengal governor to give his assent to the bill. असेंबली में इतिहास हो गया। आज देखिए पूरा देश में पहली बार ये बंगाल सरकार, ममता बनर्जी का सरकार एक बिल पास किया। यह रेप एंड मर्डर का कड़ी से कड़ी तक पूरा ये लाइफ सेंटेंस टिल डेथ एंड मृत्युदंड, इसका ऊपर बिल पास हो गया। गवर्नर साहब को अभी तुरंत ये बिल वो साइन कर देना चाहिए। The BJP, on the other hand, called the proposed legislation unconstitutional and accused Mamata Banerjee of doing a drama. The BJP asserted that a central law already exists which has a provision for the death penalty. ममता बनर्जी ड्रामाबाजी कर रहे हैं और गैलरी शो कर रहे हैं, इसलिए ये जो लेजिस्लेशन उन्होंने लाए हैं ये लेजिस्लेशन पूरी तरीके से असंवैधानिक है। ऑलरेडी न्याय संहिता के ऊपर न्याय संहिता है जो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है और जिसमें डेथ सेंटेंस का भी प्रावधान है। तो ममता बनर्जी की ये जो उन्होंने लॉ लाए ये पूरी तरीके से ड्रामाबाजी है और इसको दिखाने के लिए हमारे विधायक लोगों ने समर्थन किया, लेकिन ये जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद ये कैंसिल होगा। ममता दीदी में संवेदना नहीं है। दीदी ने दबाव में बीभत्स घटना हुई है बेटी के साथ, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब ये कानून लेकर आई है। So that was Shivraj Singh Chauhan, and before that Sukanta Majumdar, a former chief minister and a current sitting chief minister. Actually, both of them are chief ministers, are current ministers, and they have pointed out to how this is not essentially a bill that was needed because the provisions that it entails regarding punishment for convicted rapists are already entailed in existing bills. And that is the contention that the BJP has been raising, that it is not a matter of the legislation being lacking, it is a matter of the intent being